अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो चलो सीखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए मटेरियल, एक बॉल पेन, कोई भी फेदर यूज़ कर सकते हैं आप, वायर थ्रेड एंड सीजर ऑफ कोर्स। इसके अलावा एक रिबन, कोई भी रिबन आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग अ पीच कलर ओवर हेयर एंड सम ब्यूटीफुल बीड्स फॉर द ब्लिंग। आई एम गोइंग टू कट द टॉप पार्ट ऑफ द पेन क्योंकि इससे जो रिबन है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होती। एंड आई एम गोना ऐड द फेदर ऑन टॉप ऑफ इट। हमेशा याद रखना है कि आपने रिबन को बैक साइड से टाई करना है एंड देन लेट इट रोल ऑन इट्स ओन। यू गाइस कैन सी कि मैंने बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ग्लू यूज़ किया है। टॉप पे लगाया है, बॉटम पे एंड मिड में थोड़ा सा। नाउ आई एम मेकिंग डबल लेयर्ड बो स्टाइल which you guys can watch in the video and follow. Adding the same ribbon piece in the middle to give it a clean look. Now after this is done, I'm going to take another piece of the ribbon और उससे मैं उसकी बॉटम जो हमारे पास हैंगिंग्स होती हैं वो मैं बनाऊंगी। Now it's time to assemble, so I'm going to add the hangings first and then the bow on top. After it's done, you can add any sort of bling you want. Here I'm using white pearls. Since these are Nikkah pens, so I'm adding the Kabul hai cutout on top of it. ये cutouts मेरी online store में available है. You guys can contact me directly on Instagram. I'll share the link below, and you can get these Kabul hai cutouts for your Nikkah pens as well. You guys can add golden or any color flower you want. I added a golden foamy flower on top of it. So we are done, and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe the channel and hit that bell icon for more notification. See you guys next time. Bye bye.